Hello and welcome back, folks. You are watching the eISL Season 2 brought to you by Nodwin Gaming as we head on for yet another fixture. And this fixture is quite odd, to be honest, because on one side, we've got Odisha FC playing their last game of this campaign. And by last game, I mean they have no chance on making it to the playoffs, right? Yesterday, they had to do it all and they failed. So today, they are going up against Northeast United FC, a club that right now sits at the second spot, hasn't lost, in fact, has just lost one single game, and that's just pretty much it. And I have gone on to win every single one of them. And when you're going against the Titans, I mean, this is going to be a David versus Goliath showdown. And this time, we've got Imad Rock starting again. We've got Nate, usual suspect, right? For Odisha FC, no changes there in their starting order. So Ranj Jain will come to finish it all in the third. But TT, looking at the matchups, tell me your speculations about this game. I think it's too tough. क्योंकि देखिए टफ इसीलिए है कि स्कोर लाइन क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना टफ है. इमाद के सामने इटनेट वी नो कि इटनेट काफी अच्छे प्लेयर हैं, बट इमाद कुछ ज्यादा ही अच्छे प्लेयर हैं. एंड स्पेशली इन फॉर्म है, कहने की कह सकते हैं. स्पेशल प्लेयर. सो या एंड वो इधर शायद कम से कम मुझे लगता है कि अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो 4 गोल्स तो कम से कम वो मारने वाले हैं और शायद ही वो कंसीड करे. तो 4-0 फॉर फर्स्ट मैच मेरा प्रेडिक्शन यही रहेगा और शायद को मैच में जाके सब कुछ खत्म होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके का हम लोगों को अभी तक चलता हुआ दिखा है कैंपेन दोनों ही क्लब्स के, मुझे लग रहा है कि शायद इस गेम पे ओडिशा एफसी के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. You know, being commentators, we are supposed to be neutral, do not have to exercise any personal bias, but every single time, TT, you watch Imad play, he kind of sways your heart away. Like, it's such beautiful FIFA. And, this is for the moments I love casting this event, right? Just to watch, players like Imad, Adizima, and all of them play. And Imad is just something, extraordinary for me. And to go up against a player like Imad and go out and beat him, it is going to take Nate to just break some mountains over here. He has to do that because I don't know how Imad's gonna lose this one because Northeast United FC, they're one of the hot favorites. They've already qualified for the playoffs. So this is one of those matches where they're playing just to be breathing under the neck of FC Goa, because if let's say the sky comes falling down and if they lose this matchup, then Mumbai City FC might take over. But still, Northeast United FC have just played 7 games and they're still at the second spot. Goes on to show how good this team has been. It's just that first lost against Bengaluru FC, and ever since they never looked back. And this is the point where you kind of bring on this topic about Odisha FC again, where Odisha FC, this was a club, of course, I belong from Odisha, and I'm speaking against the boo fixes, but no. So Odisha FC, I was really hopeful because even last time in the first season's campaign, it was Shubham and Duggal representing, and things weren't working out for them in the starting phase. Later, we saw Duggal also recovering form, but then we saw Shubham dropping a few games. So that was one of those campaigns where they finished almost last, but then in this season, when I saw Nate and Bhagya, I asked around the community. The community was really positive about these two players. Were all in praise. And the way things started off, that bad luck phase going on for Bhagya, and it carried on for so long. And when it got removed, I think there was nothing much left to sort of reinstate or some recover there. But Odisha FC right now, Nate, we know he's a fantastic player. He tends to go on for the scorings, and right now looking really attacking, trying to find some room with Mbappe, will eventually go for a back pass. With that first 3 minute तो बहुत ज़्यादा aggressive start इधर हुआ ओडिशा एफसी की तरफ से, एंड यूजुअली ये हम लोग को दिखता है. नेट्स जब भी उनको बॉल मिलता है वो कोशिश करते हैं कि वो अटैक पे जाए और देन जाके एकदम बॉक्स के बाहर पासेस खेले, जो कि यूजुअली हम लोग एक ट्रेडिशनल फीफा दिखाते हुए आया है. क्योंकि उधर अगर आप पासेस खेलते हो तो डिफेंडर्स को प्रॉब्लम होता है उधर इतना जल्दी मूव करने में. फिर अगर मूव कर जाते हैं देन एक बैक पास और पूरा बूम, आपका डिफेंस खाली हो जाता है. लेकिन उस जगह पे भी अभी डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करते हुए दिख रहे हैं बहुत सारे प्लेयर्स. उनमें से एक है इमाद.
हिमात का सिर्फ अटैक ही नहीं, हिमात का जो डिफेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिला है हाल ही के कुछ दिनों पे। शुरुआती में तो अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग देखने के लिए मिल रहे थे, डिफेंस में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही थी जिसकी वजह से वो गोल कंसीड कर रहे थे। बट देखिए इधर एक येलो कार्ड कंसीड कर चुके हैं, थोड़ा हार्श टैकल था। बट एक बार फिर से हिमात के पास बॉल प्रॉपरली कंट्रोल्ड वे पे खेलते हुए बीच से एम्बापे टुवर्ड्स रोनाल्डो, बट वैन डे सार को इधर क्या, नो वे, Oh वैन no. डे सार तो आ गए बट वैन डाइक से टच हुआ रोनाल्डो एंड बूम, पेनल्टी। Early action, and Imad says thank you. Thank you, Nate. Thank you for giving this. And there you go, a meditate scoring right off the bat. And what goes around comes around, and it is in circles for Odisha FC as they are demented, haunted, because it's a final game of the campaign and reminiscence of the first one. Thankfully, though, did not get a red card at least, but still conceded a penalty. Now Nate has to pick up from the pieces he's made, and good look for sucker punch, but had to avoid it. ओह फाइनली तो लगा था शायद ये थ्रू बॉल के साथ एक और बड़ा बॉल मिल जाए इधर रोनाल्डिनियो। कोशिश तो नेट्स की तरफ से भी देखने के लिए मिल रहा है बट वो फिनिश नहीं कर पा रहे क्योंकि इमाद ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे, और यही चीज सबसे पॉजिटिव है इमाद की तरफ से अगर देखा जाए तो, इसी वजह से उनका डिफेंस फेल नहीं होता इजीली। देखिए इस बार मौका है अच्छा, मेसी ओ बस देने की कोशिश बट माल्डीनी बीच में आ गए, काउंटर पे इमाद, ज़िनेडिन ज़िडान आने के बाद से ना मिडफील्ड दोनों लाइक कोई भी क्लब का जो भी यूज करते हैं उनका बहुत स्टेबल हो जाता है, मौका बट फिनिश नहीं कर पाए। एम्बापे के साथ इस एरिया से एटलीस्ट आप चाहते हो कि आप कॉर्नर पे फिनिश करो, लेकिन सीधा अरे इधर वैन डे सार के हाथों पे। Oh, all right. So looks a little end to end. I mean, Nate has been for sure creating chances, but you know what? I know, knowing Imad play, he gets conditioned quickly. He kind of understands what the opposition is trying to do, and at a certain point will figure out a counter. But this is a beautiful pass given on towards Theo Hernandez, a player lock initially, but has been broken off. Goes towards Ruud Gullit, and he takes a shot. Oh, All right. wow. लाजवाब लेवल पे इधर शील्ड किया, इतना इजी नहीं होता इस तरीके से शील्ड करना जिस तरीके से उन्होंने इधर शील्ड किया, और बिल्कुल भी इधर जगह नहीं दिए कि वो उधर से शॉट एटलीस्ट ऑन टारगेट रख पाए। बट इस बार मौका रोनाल्डिनियो, ये करने वाले हैं, ये वो कंटिन्यूअसली करने वाले हैं। 2 बार कोशिश किए, जब वो अंदर नहीं जा पाए डिफेंस को तोड़ के, वो दूर से शॉट लेंगे, वो रुकेंगे नहीं। बॉल एक बार फिर से छीन चुके हैं, खतरा टला नहीं है। टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो, रोनाल्डिनियो वन मोर टाइम एंड इस बार गोल होगा, एंड हुआ भी, व्हाट अ गोल इमाद। इसी वजह से हम लोग थोड़ा बायस्ड हो जाते हैं जब भी इमाद का मैच आता है, और बायस्ड होते भी और वो रिजल्ट भी डिलीवर करते हैं। This was beautiful. This was beautiful. And this is what, you know, we love about Imad. He quickly understands that situation, builds up those plays, and you can see that poker face. He just enjoys himself, like quite chilling, because at this point, you know, Northeast United FC do not have any pressure. All they know is that they are happy to be at the second spot. I mean, it's very difficult to get on the first, and how do they do that? Because FC Goa, they refuse to accept defeat. Haven't lost a single one, but just that one loss sort of kind of staining their flawless run so far for Northeast United FC, and Imad just carries it forward. And now, good set of passing. Oh, nice one there with the heel to heel. Wanted to go for a shot, but Virgil van Dijk
saves the day again. But as yellow for Zinedine Zidane, it's fine. It's okay. Yeah. बट देखिए इधर आई थिंक मुझे लगता है कि गेम जो है वो बहुत दूर पहले ही जा चुका है. इस बार एक और पास देने की कोशिश, अभी भी बॉल उनके पास. वेट Wow. वन मोर टाइम. इमाद कैसे कंट्रोल कर लेते हैं इस सब पोजीशन पे. वो उनका आंख चील का आंख की तरह, लाइक चील जिस तरीके से नजर रखते हैं अपने शिकार के ऊपर, उस तरीके से वो छोटे छोटे गैप से भी पास निकालते हैं. और पास तो निकालते ही है, लेकिन उस पोजीशन पे भी इतने पास खेलना, वो जो माइंड में पहले ही मैपिंग कर लेते हैं, वो आता किधर से है. लाइक ये स्पेशल प्लेयर है, जैसे कि आपने कहा था. फॉर श्योर 3 गोल्स ऑलरेडी हो चुके हैं शुरुआती फर्स्ट हाफ पे. 41 मिनट्स हुआ है सिर्फ और सिर्फ. एंड आई थिंक 4 गोल मैंने शायद बहुत कम बोल दिया. And we know Imad can punish you once he gets into the groove. And as Nate, this is kind of another thing that goes on your back of the mind, right? You kind of start to flip, and we can see Nate already getting flipped over. He's going for those sliding tackles, and he had done that yesterday as well. But for now, Imad finding some room and space. Oh, it almost gotten through, but Maldini just spots the ball out of the play, and out it goes. And there you go. The first half whistle gets blown. But so far, a pretty dominant half for Northeast United FC. Yeah. Yes, we can say that Odisha FC, in fact, Nate has created a lot of chances. He's been going for the shots, but hasn't really been clinical there. So few work to be done, and Northeast United FC just carrying forward their amazing run so far in the eISL. Pretty comfortable, Imad. 3-0. We're seeing those, nice composure in the final third being exercised by Imad, and that's paying him off. And as a result of which, at this point, Nate has kind of lost himself in the process. He's going mad. At some point, he's just going to break his controller. I'm pretty sure that's going to happen. You could see that raging mode of Nate coming on. But yeah, I think the final game, I think my only suggestion for the players of Odisha FC would be just to enjoy this last one and maybe Yeah. take some learning lessons from here, and just prepare for the rest of the tournaments that are also ahead, apart from the eISL, and maybe we get to see them again next year in eISL season 3, and then could see a better version of them. I mean, Nate has still been one of those better players, and just as we speak, quickly finds a goal through. Nice. Imad was not expecting, and Nate says, "Yahi to karna tha, yahi to karna tha," and this is how you complete. And yeah, there you go. Yeah. एंड आई थिंक आपने सही कहा कि इधर देखिए सबको पता है, उनको भी पता होगा कैलकुलेशन के हिसाब से कि ओडिशा एफसी के लिए अभी चांस नहीं है. तो एंजॉय कीजिए. लास्ट मैच है, eISL सीजन 2 है, और बहुत सारे प्लेयर्स इधर ट्राई ज़रूर किए थे क्वालिफायर्स पे, बट यही प्लेयर्स हैं जो कि अभी खेल रहे हैं सीजन 2 को. तो यस, इधर से बहुत कुछ उनको सीखने मिलेगा, और उसी के साथ साथ बहुत एक्सपीरियंस वो लेके जाएंगे. कभी कभार हो जाता है कि फॉर्म डाउन चलता है, लेकिन हम जानते हैं नेट्स अपने क्लब के लिए ज़्यादातर टाइम अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि जिस टाइम पे भाग्य का भाग्य नहीं चल रहा था, उस टाइम पे नेट्स ही चल रहे थे सिर्फ. तो या इधर एकदम खाली खड़े हुए थे रोनाल्डिनियो. किसी ने भी इधर देखा नहीं. लगे ये तो एआई का भी काम है कि आपके जो प्लेयर्स है वो सही उस जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो आज कुछ भी उनके पास नहीं जा रहा है. एंड सिर्फ उनका ही नहीं, इधर जो पास निकाल रहे हैं इमाद, शायद एआई भी नहीं समझ पा रही कि ऐसे भी पासेस हो सकते हैं. Yeah, I mean, at this point, Imad, he's just going to take over, right? And Odisha FC fans, the juggernauts, would want the misery to end. But for Nate, you would want him to score a few individual goals. His last individual matchup, and he's broken free with Mbappe. Oh, there he goes for the pass and extra one. And don't really understand why. Yeah. But
देखिए इधर जिस तरीके से नेट्स को इधर गोल दागा गया था, उसके बाद कोशिश तो करेंगे नेट्स की एटलीस्ट एक गोल और दागे, एंड उसका मौका पूरा बन चुका है। सिर्फ थोड़ा स्प्रिंग हो गए राइट साइड पे, ज्यादा इधर निकल गए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इधर वो जगह नहीं मिला। बट चांसेस तो अभी क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ पे जो गेम चल रहा था उससे तो बहुत बेटर खेल रही है अभी नेट्स, क्योंकि फर्स्ट हाफ पे तो बिल्कुल भी उनके तरफ कुछ था ही नहीं। स्टैट्स की भी अगर बात किया जाए वो भी उनके खिलाफ ही था। बट सेकेंड हाफ चालू होते ही उनके तरफ से वो स्पार्क दिख रहा है, वो अटैक पे जा रहे हैं, वो प्रेस कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है उनके लिए। हो सकता है कि वो आगे नहीं खेलेंगे या आईएसएल पे इस सीजन एटलीस्ट, बट क्या जाते जाते एक सही अच्छे नोट पे अगर एंड करके जाते हैं देन उनको कॉन्फिडेंस देंगे और वो चीज चाहिए भी। बट इस बार देखिए, इस बार रिस्की हो सकता था और बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन कहने के बन गया था। बट देखिए फिर से एक बार इमाद इन मेकिंग ऑफ मास्टरपीस, बीच में मौका, रोनाल्डिनो, मेसी, और नो Oh God. He got ever so close again there, Imad. And just look at his face on his cap. Oh my God. Oh my God. That roulette comes in and, well, take a shot, Imad. Take a shot again. Oh, it misses out. So, yeah, the chocolate boy is out for murder in this matchup over here, creating a plethora of opportunities. And Nate just has to defend with all his might. And I like this about Nate. You know, he's now kind of playing his favorite players. He's gotten Christopher Nkunku up, even Joao Felix. We haven't seen Joao Felix much, only in that one game. This time, takes that shot. And this is where Nate was like, isko nahi lena tha, isko hatao. I need my old players back. And yeah, I mean, sometimes this is where, you know, you if you had maybe a Ronaldinho, a Pele, or somebody else, and Mbappe mostly we see in that position kind of deliver, right? So yeah, I think for that he could just go on and change the players, because this otherwise I'm pretty sure would have been a goal, 100%. क्या एंड इस गेम के अंदर बहुत कुछ एंटरटेनिंग देखने के लिए मिल चुका है ऑलरेडी हम लोगों को। एंड आई थिंक और भी गोल्स है इस गेम से, जिस तरीके से लाइक दिख रहा है दोनों ही खेलते हुए, मुझे लग रहा है कि और भी थोड़े बहुत गोल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेट्स सी किसके तरफ से आता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द चांसेस तो है कि मात के तरफ से ही आए, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। बट इट नेट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से कम बैक कर चुके हैं। सो हर्नांडेज, डेविस आते हुए देखने के लिए मिले, एंड यूसेबियो का जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है जब से उनका फुल बर्थडे कार्ड आया है। Yeah. 93 रेटिंग, बहुत ही अच्छा किल मूव्स, 5 स्टार बिग फुट। बट देखिए फिर से शॉट एंड वैंडेसार बचाएंगे, एंड आई थिंक हिटनेट्स भी सोच रहे हैं कि ये शॉट कैसे आया। वो कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन देते हुए दिखे थे। Oh, oh, just barely saved by the whiskers. But all right, you know, both these players offer shenanigans over here. And at this point, you would want to see a highlight goal coming out. You know, one for the reels. Be it from Nate, be it from Imad. I just want to see a goal that would literally just throw me off my seat. As a quick set of passes between the players of Odisha FC with Christopher Nkunku. There was a time when Path to Glory was going on. This card was one of the hot sellers. And for all the good reasons, you know, Christopher Nkunku has been such an amazing discovery, but sadly could not play in the World Cup because of injuries I hear. Otherwise, things could have been different there altogether, because the kind of a super squad that France has. But yeah, coming back from international football, getting back into eISL, we did see in the middle, right? A few of the players were opting for Christopher Nkunku. If you remember, I think it was Saki who kind of used to play him. Sometimes you'd seen Shubham. Maybe I'm not right, but yeah, there were a few players that used to get him. And one of those reasons is he's got that 5-star weak foot and 5-star skill moves. Really helps you out, could easily run and could play from multiple positions. A very good card nonetheless.
But right now, for the past couple of minutes, Nate has been having the possession. Imad has to be, kind of fighting for it. But these are those dying phases of the game, right? This is where, all right, he takes Oh, a shot, a power shot at yeah. that, and he knows the game's over. The final game, and Nate, not the way he thought, not the way he would have went out of eISL. But yes, the challenge in front of him was just too much to handle. It was Imad, one of the finest players, and he delivers yet again a 4-1 scoreline. And Northeast United FC have an early lead. या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जिस तरीके से फर्स्ट हाफ चालू किए थे मे बी एंडिंग उस तरीके से हुआ नहीं और कहीं ना कहीं इधर सेकेंड हाफ पे आके बहुत अच्छा कमबैक दिखा था ओडिशा एफसी के तरफ। हालांकि जीत गए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये कहने के थोड़ा बहुत तो था इमाद की तरफ से कि हाँ वो जीतते हुए दिखेंगे, बट नेट्स के लिए इधर कहना होगा कि वो सेकेंड हाफ बहुत अच्छे से मेंटेन किया, बहुत अच्छे से। Right. Yeah, I think this, like you said, right, it was kind of all done and dusted in the first half only. Imad going off to such a nice lead, and him being in so much control over the ball. Never felt like, Nate got into control. I think in those final dying moments of the game, he had a little bit of possession, but Imad gets so tough to deal with, right? We have talked multiple times about, Imad having so much versatility, so much depth in his gameplay, that if one thing does not work out, he goes for the other. And today was one of those evenings where he wasn't really tested, to be honest. I did not see Imad even sweat it out for a moment. He was pretty chill. And, this is something that was kind of anticipated. And, yeah, for all the right reasons, because Northeast United FC have been so good in their campaign this time, especially when they were struggling last season. And this time, however, Imad finding the right teammate, Saransh, and both of them just complementing each other. This has been a really good one for them. I think it's that only one hurdle that they would be wanting to get their vengeance back on Bengaluru FC, and that's going to be land, folks. If that happens, we're going to enjoy. Imagine, CJ and Saransh, two brothers, and two of them representing the same organization, barring eISL. They go up against each other, and Imaj, he must be waiting like एक बार मिल जाए मौका बस देख लूंगा. But Bengaluru FC have also, evolved with time. But let's take a quick look at the scorecard, folks. The first game, ends with a very comfortable win for Imad Rocks. As we head on to the second one, where we've got Vakya also joining Nate, and Imad's duo Sharansh also in the fray. कहने की बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन ये मैच गया फॉर एटलीस्ट इमाद ऑन द अदर हैंड 8 मिनट्स उनके लिए टफ था ये टास्क कि वो इधर संभाले और ये गेम खेले। उनके लिए टफ रहा, वो हारे भी, लेकिन वो एक गोल करके गए और उसके साथ सेकेंड हाफ पे रिकवरी काफ़ी अच्छा था। सेकेंड हाफ पे दोनों की तरफ से एक एक करके ही सिर्फ गोल्स आते हुए देखने के लिए मिले। सो या पहला मैच तो खत्म हो चुका है। अभी बात आता है इधर कोऑप के ऊपर। जाते जाते ओडिशा एफसी क्या अपने लिए 1 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं, वो सब कुछ इधर शायद पता चल जाएगा हमारे इस कोऑप पे। क्योंकि अगर ये कोऑप पे ड्रॉ करते हैं या फिर जीतते हैं, देन जाके हम लोग कह सकते हैं कि आखिरी गेम के ऊपर डिसाइड होगा कि 3 पॉइंट किसी के पास जाएगा। बट ये कोऑप मुझे लग रहा है फिर भी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का बल्ला बहुत भारी है, क्योंकि कोऑप के ऊपर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो कॉम्बिनेशन, जो सिनर्जी है, वो बहुत शानदार देखने के लिए मिला है। और थ्रू आउट द सीजन हम लोग उनकी तरफ से कुछ इसी तरीके का आउटकम आता हुआ दिखते गए। Three things that you can't escape: death, taxes, and Odisha FC going for that long ball right from the very start. They've been doing that for the past couple of games, TT, if you remember. And I'm pretty sure they're going to do that tonight also. And I'm kind of speculating if Imad and Sharansh have done their homework, because they're very good chaps. The how do you call them? The teacher's best student, right? They always keep on taking notes. They do not seem like the bad guys in school, right? The good ones, the studious ones, and Saransh, with his spectacles on and that serious face, always there.
You barely, see if that man's happy anytime or not, and then you uh, get in talking terms with him, and then you realize, oh, that's just normally how he is. Usually happy, usually very chirpy, and very nice person, to be honest. And Imad, you go on to his stream. I kind of have been doing that for a lot of days lately. I've been that silent viewer. Just go there if you want something of a very chill stream. There, just head on to Imad's channel. If you haven't subscribed to him yet, it's Imad Rocks on YouTube. You can check him out, and has been quite getting into the arena of content creation lately. And if he can score goals like this, certainly deserves applauds. And well, you can learn a few things from there as well as we head off into the kickoff. So it's Odisha FC versus Northeast United FC, and Odisha FC from left to right, Northeast United FC from right to left in this co-op matchup. Let's see what awaits us. लेट्स सी क्या होता है इधर, बट शुरुआती से ही अगर देखा जाए तो एकदम स्टार्टिंग मोमेंट से इधर प्रेसिंग चालू हो चुका है. बीच से आए थे रोनाल्डो, कंट्रोल नहीं कर पाए, बट देखिए क्या शानदार तरीके से बॉल फिर से छिना गया. लियोनेल मेसी टू एम्बापे. क्या शानदार मूव था. आई थिंक ओवरस्टेप करके निकले और फिनिश. Oh my God, that step over. And just in that previous matchup, we saw one of those similar goals, but that was a different set of skill moves, right? It was elasticos, right? Yeah. But this time, this was a phase where step over was the meta. And we have seen a lot of players doing that actually, but this is how it's supposed to be done. Our two lovely teachers, Saransh and Imad, showing that to us as they venture in, trying to get their second goal. A cutback onto which Ronaldinho goes for a step over. Still somehow fighting for the ball, and Van der Sar thankfully saves it. Yeah. एक बार डिफेंडिंग देखिए उनका, क्या शानदार कोऑर्डिनेशन है. जब राइट पे प्लेयर है, लेफ्ट पे आ जाएंगे, बहुत ही ज्यादा लाजवाब. तो दोनों मिलके, एटलीस्ट दो प्लेयर मिलके एक प्लेयर को तो मार्क कर ही कर रहे हैं. ये एक बहुत ही अच्छी चीज देखने के लिए मिला है उनकी तरफ से एक बार फिर से, और इसी वजह से इतना जल्दी पोजीशन जो है वो चेंज कर पा रहे हैं. बेहतरीन कोऑप गेम का प्रदर्शन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की तरफ से. उसी बीच में एम्बापे टुवर्ड्स रोनाल्डिनियो. रोनाल्डिनियो डांस करते हुए विद बॉल, अभी भी कंट्रोल में था, बट फाइनली मार्टिनी बॉल लेके निकलेंगे. थोड़ा सा तो खतरा टल चुका है, लेकिन इधर देखिए बॉल लूज नहीं करना है. बॉल अगर लूज कर देंगे देन कोई भी चांस नहीं बनेगा. इस बार के लिए पास टुवर्ड्स हुलीद, बेहतरीन पोजीशन, यूसेबियो फिनिश कर सकता है, लेकिन वर्जिल वैन डाइक का बेहतरीन शील्डिंग, एंड ये होगा. डिफेंस बहुत स्ट्रांग है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड. Yeah, I mean, if Odisha FC somehow manages to beat Northeast United FC, oh my God, how on earth was he onside? But he was, as the attack is still on. And now with Mbappe, takes that shot. But thankfully Van der Sar just diving and saving the ball, goes out for a corner. But you know what? If Odisha FC could somehow potentially give an upset to Northeast United FC, that is going to be a huge dent in their run, because then suddenly all the other clubs will be like, hey, if they've done it, we can do it too. So Northeast United FC sort of have to maintain the supremacy that they've been doing so far in the league, and what a start it has been, to be honest. The first 25 minutes have been electrifying from both these clubs. Sparks have been going out, and this time an outside footer shot. Oh my goodness, even Nate breaks off with a smile there. He knows. What do you do against sheer composure like that, TT? What do you do? क्या करते हैं आप यहाँ पे? पहले तो मैं इधर पहुंचने के लिए कोशिश करता, लेकिन क्योंकि इधर जो प्लेयर्स है, ये प्लेयर्स अलग लेवल पे खेल रहे हैं स्पेशली. और उसी के साथ साथ आई थिंक अभी तक मैंने बहुत दिन से, लाइक 3 साल से मैं फीफा खेल रहा हूँ, मेरे ओपोनेंट पे कोई इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर आए ही नहीं है. तो मुझे पता भी नहीं है कि करना क्या था उधर, क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते थे मेरे हिसाब से. तो जिस तरीके से इधर डांस किया गया विद बॉल, राइट लेफ्ट, डिफेंडर राइट जाए या लेफ्ट जाए, कंफ्यूज ही हो गए उधर, और उसके बाद तो फिनिश हुआ. ओह माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस. नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड
ये क्लब इस बार शाइन करने वाले हैं, या हो सकता है एफसी गोवा अनबीटन है, लेकिन जो मैजिकल गेम है वो इस क्लब से देखने के लिए मिलता है। अभी तक मैजिक या फिर जो अनएक्सपेक्टेड गोल्स के लिस्ट पे मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की 3-4 गोल्स तो कम से कम आने वाले हैं टॉप पे। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब गेम अभी तक देखने के लिए मिला, बट ये ख़त्म नहीं हुआ। 35 मिनट्स हुआ है सिर्फ जस्ट, इसके बाद 65 मिनट्स बाकी है और बहुत सारे गोल्स भी आना है। बट मुझे लगता है कि ओडिशा एफसी उनको थोड़ा सा स्लो डाउन करके खेलना चाहिए। वो बहुत पेस लेके जो बॉल जब भी मिल रहा है सिर्फ वो आगे दौड़ रहे हैं, उनका पासिंग गेम हो ही नहीं रहा और आगे दौड़ने से गोल वो नहीं स्कोर कर पाएंगे और बॉल चला जाएगा ओपोनेंट के पास। बट फिर भी इस बार के लिए बॉल था, बट क्या इधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड Northeast United FC. Oh, this could be. No way. No way. Just at this point, if I were going up against players like Saransh and Imad at the same time, there's an option on your PlayStation. You've got a PS button. Just press it, go to FIFA 23 and just close the application. You're done and dusted. Oh no! That if that would have gone in, I was done. I was done. I've had enough. Because look at these players go. They have, taken so many kinds of shots. This was a driven one, but the previous one, that outside footer, when they realize that the normal shots Van der Sar is saving, go for an outside footer. This time, however, does not need, just needs to tap it in with Ronaldinho and they will go to celebrate. Northeast United FC just moving down Odisha FC as they sweep the floor, scratching their nails, but Odisha FC, the boys know कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जैसे क्लब को हराना है। तो सब कुछ कोशिश कर चुके हैं। It's not like they have been off or something. It's just that Northeast United FC have been better in every single regard. And this is where the question arises, right? If we get to see that rematch between Northeast United FC and Bengaluru FC, imagine the sort of sparks that will fly. And we have saved the best for the rest, right? For the last, right? Yeah. The final showdown, folks. Don't forget 26th April. If you need to mark it on your calendar, then just do that. Because that night we have got FC Goa taking on Northeast United FC. And if FC Goa can drop a game, then that has to be certainly against this club, right? Yeah. Yes. एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तो आज से क्या, मैं बहुत पहले से एक्साइटेड हूँ उस मैच के लिए, क्योंकि वो कुछ बैंगर होने वाला है। आई थिंक वन ऑफ द क्या शायद बेस्ट गेम हो सकते हैं इस पूरे सीजन के अभी तक जितने भी मैचेस हम लोगों ने भी देखा है। क्योंकि उधर आदिजीमा है, इधर इमाद है, उधर वंशज है, इधर सरांश है। वाह! बट इस बार इस गेम के ऊपर एक तरफ एटनेट एंड वाग्या है, दूसरी तरफ इमाद एंड सरांश। इधर ऑलरेडी इमाद एंड सरांश 3 गोल का फासला बना चुके हैं और सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं देखना होगा ओडिशा किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि ओडिशा एफसी पिछले बार भी इधर बहुत ही अच्छे तरीके से इधर परफॉर्म करते हुए दिखे, बेहतरीन तरीके से। पिछली बार एक ही गोल कंसीड किए थे और एक गोल दागे भी थे। बट नाउ क्या इस बार भी वैसा कुछ होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड अपना फ्लो बना के रखेगी, वो देखना होगा। इधर बहुत ही अच्छा कोशिश था, लेकिन वन डाइक बहुत सही टाइम पे बॉल इधर छीनते हुए दिखे। This is where I would want Odisha FC to at least score one. Their final co-op game together as a duo, and I want to see a magical goal in the making. To be honest, for the Juggernauts, at least just to reassure the fans that, yeah, they gave their best. And in fact, they're doing so. It's not like, they're trolling or they're YOLOing. They're trying so hard. And this time, they directly go for a shot. But it goes in vain because Van der Sar stands right in front of the post. Very difficult to get past him. There was power in that shot also. But that long reach, that height, the diving ability just comes into play. As Odisha FC showing some tenaciousness there.
But no, Northeast United FC. Oh, all right. This is a good Oh, chance. Go with that step over. Takes that shot, but a slight tackle from Virgil van Dijk and threat averted. Just like that. yeah. मौका कहीं ना कहीं मिला था, लेकिन उसको भुना नहीं पाए। पोजीशनिंग के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के पास अभी ज़्यादा पोजीशनिंग दिख रहा है। एक बार फिर से बॉल छीना गया ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी, नो, मेसी, व्हाट पेनल्टी! विद दिस पेनल्टी मिलेगा। बॉडी पुश था विद विदाउट द बॉल, क्योंकि बॉल आगे निकल गया था, देन पुश हुआ, पेनल्टी मिला और बच भी गया। सीधा खेले थे, गोलकीपर को मूव नहीं कराए, उसे सीधा उसी जगह पे होल्ड करके रखे और उसी के साथ सेव भी किया गया है। Vagia left the controller there. I think it was Nate who decided, no, we'll just play around the center. Don't overthink. And as a result, now they break on the counter. All right. Northeast United FC stealing it away. Oh, this could be really deadly. They charged in the defender. Now Virgil van Dijk has to do the defending. And yes, he does so in a good fashion. As now a pause has been taken. This is the time where we get to see those Haalands coming in and all the remainder of the substitutions. Maybe a Pele also sneaks in there and gets into the playing 11 right now. But yeah, I think so far this game has been kind of back and forth with Northeast United FC showing that attacking resilience all the time. They've been really calm, really composed, even in terms of their defense. Also, we have seen them exercising extreme caution. It's not like they realize that, yeah, the battle's won, but we can pretty much chill, we can enjoy ourselves. No, that's not the case. And yeah, they've been both attacking wise and defensive wise really good. As a result, Odisha have been trying a lot. They've been getting there, also getting to the final third, have been taking a few shots. One of them, of course, being defended by Van der Sar there. On the other occasions, look at that. What do you do when you've got Virgil van Dijk marking you? इधर बॉल साइडलाइन के बाहर गया, थ्रो इन मिलेगा, लेकिन देखिए बिल्डअप की ज़रूरत है, टाइम अभी है नहीं, आखिरी कुछ 15 मिनट का गेम बाकी है इस पूरे इंटायर कोऑप मैच के अंदर, और बॉल फिर भी ज़रा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ओडिशा एफसी। रोनाल्डो टुवर्ड्स हकीमी, मुश्किल है। देखिए इधर जो भी कुछ भी हो जाए, इधर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दे रहे अपने डिफेंस को प्रॉपरली। दोनों मिलके चार्ज कर रहे हैं। एक बार फिर से देखिए लुशियो के पास चला गया, दो मिलके इधर दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट किए, और ये जो कोऑर्डिनेशन वो बना रहे हैं, देखिए इधर अगर हम लोग पेन एंड पेपर लेके बैठते हैं तो वी नो कि दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट करेंगे तो बॉल निकल जाएगा, लेकिन उसको करना कंटिन्यूअसली ये टफ है। बट वो उस एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, बार 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 बार। ये बहुत प्रैक्टिस लगता है इसके लिए, बहुत फोकस लगता है इसके लिए, और ये दोनों ही चीज़ पूरा कूट कूट के भरा हुआ है इन दोनों ही प्लेयर्स के बीच में। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसी वजह से इस मैच में शायद क्लीन शीट रख ले। 3-0 ओडिशा एफसी काउंटर पे। फाइनली एक मौका राइट हैंड साइड से जार्जिनियो, रन एम्बापे को और क्लोज रहा होगा पास लेने के लिए, लेकिन नहीं आ पाए। फिर भी रोनाल्डिनियो के पास बॉल था, आखिरी चांस था शायद ये। Well, I mean, at this point, all right. Okay. Okay. Oh, we see a Wayne Rooney. A Wayne Rooney comes in. I think this is the first time we get to see that happen. And yeah, Yes. I'll take that with open arms. Get your favorite players coming in. And now, Odisha FC, not the last chance. They would be looking for one more. Oh, not the way the pass was intended, but they will take it. Fighting for the ball. Oh, just shielding him there. And all they could salvage was a corner. Now, what do they produce? Go for a long one. They've got the keeper out.
But okay. This is one of those set piece routines that I have never seen. देखिए फिर से एक बार कोशिश चल रहा है कंटिन्यूअसली, लेकिन वो डिफेंस लाइन तोड़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। इस बार बॉल मिला है एम्बापे को, एम्बापे बट फाउल हुआ एंड मैच खत्म हो चुका है फाइनल विसल के साथ। 3 पॉइंट्स फिर से एक बार वन मोर टाइम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड सिक्योर करते हुए, और इसी के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड पहुंच जाएंगे 21 पॉइंट्स पे। एंड जो गोल डिफरेंस है वो इस गेम के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो हो सकता है ऐसा भी कि 26 ऑफ अप्रैल के बाद जाके टॉप पे फिनिश करे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, अगर वो एफसी गोवा को हराते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है भाई। अगर पे तो पूरी कायनात रुक जाती है टीटी। क्योंकि इतने सारे दिग्गज प्लेयर्स आए, कोशिश किए, कोई नहीं तोड़ पाया, कोई नहीं भेद पाया एफसी गोवा को। और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वो अपना दाव पेच आजमाना चाहेंगे। बट जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जैसे टीटी ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ब्यूटीफुल विन फॉर देम एंड yeah, the 3 points are in the bag. And now Saransh, I know you're a serious lad, you don't like to mess up or toy around, but I want to see some YOLO match, please. We got some Rooney, and this is where I think Emad Rocks kind of remembered, oh, I had a teammate called Mufu who loved doing that. He used to get Ibra, and he used to get the other players also coming into play, and might as well go on to do that, please. Yeah. And we would request that to happen if you can hear us, if you're watching the stream somewhere. But all right, coming back, let's take a quick look at the scorecard, as this confirms the victory of Northeast United FC, as those 3 points are finally done and dusted, secured. Odisha FC in their final game, that last hurrah, they fail to salvage any point. And for Bhagya, I think it's just going to be one of those games where he kind of just goes out with his head held high, but he knows the person in front of him, Saran, she's not going to go easy on him, right? He's not going to let him get that victory. Because Saransh Jain, we know what kind of a player he is, right? We have talked about him, of his accolades, about all the storylines of how he has how many times he's represented the country, and also the defending champion of the eISL. And now the other thing, this is where I was having this conversation with Duggal also, because now, folks, this entire league stage was an online format, but the playoffs, they will be in LAN. And when it comes down to LAN, TT, I'm telling you, everything changes. The atmosphere, you can feel that humidity inside the room, and you could feel the tension between the players. They might be friends off the field, right? A good buddies, very well knit together. But once they are there, every sort of drama that you can anticipate happens. And that is why do not miss them. Keep your dates also booked for the playoffs, the 5th and 6th of May. That is where you're going to see so much drama there. And, that is going to be an experience of lifetime. Because for every FIFA enthusiast, even if you've been watching the ISL, this is a different version. But the same intensity, the same emotion just kind of drips in every single game. Now, coming back to this game, TT, what did you feel that was going off for Odisha FC? Yeah. And देखिए इधर कहीं ना कहीं जिस तरीके का सिनारियो बना है, ओडिशा एफसी के फैंस इंक्लूडिंग यू, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दुखी मत होइए। मैं तो ब्लैक भी पहन के आ रहा हूँ 2 दिन से, देखिए जर्सी नहीं भेजा उन्होंने। यार मैं भी रेड, सिर्फ येलो मिसिंग है, बट ठीक है। कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल दुख तो मुझे भी है काइंड ऑफ, मैं क्या ही बोलूँ इधर। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी फैंस हैं सबको कि आप लोग जो है होल्ड कीजिए। आई थिंक नेक्स्ट सीजन, या फिर जो प्लेयर्स देखिए हर टाइम जो है वो एकदम टॉप फॉर्म में नहीं चलते, कभी कभार हो जाता है वो फॉर्म डाउन है। इस बार अनलकी भी थे जो आ चुके हैं ऑलरेडी इधर पिच पे, जो अभी उतरने वाले हैं।
वो अनलकी थे इस बार स्टार्टिंग पे। नेट्स की तरह से परफॉर्मेंस डिलीवर हो रहा था, जब अभी वाकया की तरह से डिलीवर हो रहे तब नेट्स थोड़ा मुश्किल में आ गए। तो इसमें किसी का भी गलती नहीं कहेंगे, बट हाँ, इधर और बेटर हो सकता था। बट ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट सीजन। बट उसी के साथ बात करते ही करते आज का जो इस मैचअप का आखिरी गेम है वो इधर शुरू होता हुआ। एंड कहीं ना कहीं देखते हैं क्या इधर वाकया सारांश को कोई भी झटका दे पाते हैं कि नहीं। Yeah, the final game for Odisha FC and for Vakya especially, and he has to make Saransh bleed tonight. And right off the bat, Saransh showing no mercy, wanted to go for an attack right off the bat. But Vakya seemed well prepared. And this time, however, I've been proven wrong. We haven't seen those long balls being played. I think Odisha FC did sort of anticipate that, yeah, Northeast United FC might come prepared for that. As Saranj! Oh! Oh! I thought that would have been goal. All right, it's fine. It's all right. And R9 has been brought up, so has Captivia. One other thing is I really wanted to see it. Oh! There you can see. So I thought it was R9, but it is CR7. I was just about to say that nobody has gotten CR7 to play. So finally, we get to see Cristiano Ronaldo in action. I'm wondering which card is that? Is that the Rule Breakers Ronaldo, or is it the Team of the Week Ronaldo? Because we did not get to see a lot of promo cards for CR7. Of course, we've seen that dip in form lately. But yeah, one of the most used cards. And to be honest, CR7 TT, it's a card that you kind of feel really good on the ball, right? Whenever he takes a shot, his stance, his posture, the poise he maintains, and those dribbling. It's so beautiful to just watch. I would love this game. बहुत श्योर। एंड हम तो चाहते हैं कि कम से कम एक गोल तो आए CR7 के पैर से। वो जो सेलिब्रेशन है वो कहीं ना कहीं हम लोग जरूर देखना चाहेंगे। सो दो रोनाल्डो एक साथ ऑन द पिच, एक नजारियो और एक क्रिस्टियानो। सो बहुत मजा आएगा। आज अपना रोनाल्डिनियो आई नो क्या बोलना चाहिए, बट ठीक है। पे पत्थर रखे बैठे हो जैसे रोनाल्डो ने कुछ तो आपका लिया हुआ है। बट चलिए, आप भी एक गेम एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा सा रोनाल्डो को देख लीजिए। या नहीं, मुझे बहुत मजा आता है रोनाल्डो को जब भी मैं देखता हूँ पिच पे। यस यस, लायनल मेसी फैन बॉय। बट ये लायनल मेसी के फैन तो हूँ, लेकिन जब भी रोनाल्डो खेलते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेशली ऑन अल-नसर जर्सी। बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके से इधर अटैक बन रहा है, हो सकता था क्रिस्टियानो का गोल, लेकिन इधर वैन डाइक इंटरसेप्ट किए, जिसके वजह से मुश्किल है कहीं ना कहीं भर गया। देखिए अभी भी अटैक चलता जा रहा है। ओह माय गॉड, पेनल्टी मिलेगा फाइनली। इस बार वाकया को पेनल्टी मिला है, जो कि बहुत कम दिखता है यूजुअली, बट मिला है। फिनिश करना चाहेंगे। All right, a chance to go through, but no, Saranjan saves it. Oh my goodness, gotta feel bad. I thought we could get to see that. I'm pretty sure the Lionel Messi fans have a few chants for that also, but yeah, we'll not get there. But yeah, so I'm kind of wondering if it's the Team of the Week Ronaldo, because lately he has gotten a card, a 92 one, and he also has a Rule Breakers card. So I'm wondering which one would it be, or maybe could be the flash. I think the flashback CR7 also. But it's so difficult to link that card, right? Especially you need some Portugal players with you. Yeah. Very difficult to actually get chem with Ronaldo, and that is, I guess, one of those reasons that we haven't seen him play. And this time, I think Bhagia's last game, he just wants to go with a smile, play his favorite cards, and that he's doing. Yes. Yeah, and I think रूल ब्रेकर कार्ड के साथ आप लिंक कर सकते हो, एंड आई थिंक वही कार्ड शायद यूज हो रहा होगा।
क्योंकि रेटिंग सेम ही है दोनों का। सिर्फ अगर हम लोग टीम ऑफ द वीक की कार्ड्स की बात करें तो 92 रेटिंग का एक कार्ड आया था मोस्ट प्रोबेबली विथ अल नसार क्लब, तो उधर उस कार्ड को तो लिंक करना बहुत टफ है। बट या अभी एक बार फिर से सारांश, एंड सारांश के गेम्स वो देखिए खेलते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये गेम्स है वो ज़्यादा गोल्स के साथ ख़त्म नहीं होता। वो बहुत स्लाइट मार्जिन के साथ जीतते हैं, लेकिन वो जीतते हैं। और वही चीज़ वो कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं बहुत दिनों से, लाइक सीजन के शुरुआत से करते आ रहे हैं। शायद एक ही गेम था जिसपे वो सीजे के खिलाफ एक शॉट नहीं ले पाए थे, गोल नहीं कर पाए थे, बट उसके बाद से कहने की सारांश अपना जो मेन मूव है, मेन जो फॉर्म है वो दिखाते हुए आए हैं। बट इस बार भाग्या लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे थे, De Bruyne towards Ronaldo to Cristiano, Capdevia and Capdevia। मैं तो फैन हो चुका हूँ इस लेफ्ट बैक का जब से मैं खिलाने लगा हूँ। और उसी के बीच में देखिए मौका बनता हुआ, बट थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे दिए थे लॉब पास पे, जिसकी वजह से थोड़ा दूर जाके गिरा केविन डे ब्रुयना। दूर से वो शॉट लेकिन डिफ्लेक्ट हुआ, नहीं तो एक ग्लोरियस अटेम्प्ट में भी हो सकता था ये। Oh, it certainly could have been. And one good thing about Bhagya is he's kept Saransh Jain at bay, hasn't let him score. But that could all change. But no, Bhagya being quite sturdy in his defense, very astute with his decisions. And now, oh, Bhagya. That was such a good run. That was such a good run. And there you could even see. I also like Bhagya. You know, Bhagya, DK, these are the players who kind of enjoy the game. And even for Odisha FC, I think we have to cut some slack over there because, oh, hold on, as he takes a shot this time also. Misses. And now still another chance with a corner being taken by Saran Jain, just pacing in with Lionel Messi with R9, goes for a roulette there. But no. So, yeah, what I was trying to say is that, TT, come on, I think it's their first time in the eISL, both these players, and they had been shouldered with a lot of responsibilities. And I don't think before this they might have even played together as a co-op unit, right? Suddenly bought into the league, did not have a lot of time, and then there was that bad luck phase also. Even if you remember, it sort of went on carried forward in their co-op game also. There was one matchup, I don't remember, it was in those early phases only, against which particular club, but there were at least 3 or 4 shots that hit the crossbar, and that too in the same game. And Yes. we were just kind of wondering why that is happening. And there have been multiple occasions as such. Sometimes a little unlucky, sometimes the defense was all over the place, but whatsoever, I think there will be learners. But this time Saransh does not spare Bhagya. Come in the second half and he scores his first. Yes. फाइनली बहुत देर के बाद सारांश को एक छोटा सा मौका मिला जिसे उन्होंने कैपिटलाइजेशन दिखाया। और यही होता है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं या फिर जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्लेयर्स होते हैं, उनको ज़्यादा चांसेस की ज़रूरत नहीं होता, उनका एक चांस काफ़ी है और उस चांस पे वो कैपिटलाइजेशन दिखाते हैं। और वही चीज़ फिर से दिखा। बट देखिए इस बार कोशिश करते हुए भाग्या कि उनको एटलीस्ट एक मौका मिल जाए कि इधर से वो शॉट निकाले। बट मैं इधर देखना चाहूँगा कि सब्स्टिट्यूशन पे, लाइक सब्स्टिट्यूट के बाद कौन कौन इधर आने वाले हैं, क्योंकि इस टीम के साथ तो हो नहीं रहा था। शॉट ऑन टारगेट नहीं हुआ ये। अच्छा मौका था, लेकिन अगर टारगेट पे रहता तो मे बी गोल भी हो सकता था। Yeah, I think that had to do with Cristiano Ronaldo's weak foot. I think he's got a 4-star weak foot, and I'm just wondering if it's the rule breakers card, then yeah, it's still a 4-star. But there you go, takes that second shot, and Saransh, now he's just taking over. I don't know, I think Bhagya sort of has gassed out over here. बहुत कर लिया defending, अब नहीं हो रहा, because now Saransh is just easily getting through into his defense, right into his mines also. And then those shots, right? And Saransh has so many options, right? Sometimes finish, sometimes normal shot, sometimes goes for those outside footer shots, and he tends to make it work also. This time wanted to go with a step over with Kylian Mbappe, but
No, did not happen. आखिरी 30 मिनट ओडिशा एफसी के लिए इस पूरे ईआईएसएल सीजन 2 के अंदर, और ये आखिरी 30 मिनट चाहेंगे कि वो इधर से गोल करे एटलीस्ट एक। डिफेंस काफ़ी अच्छे तरीके से इधर मेंटेन किया, बहुत ही अच्छे से इधर क्लियर भी किए, लेकिन ये गलत पास, इसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा बॉल। और इधर एक बार फिर से बॉल मिला है ओडिशा एफसी को। देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आई थिंक कुछ कुछ कार्ड्स को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं और कुछ कुछ कार्ड्स को फिर रेटिंग के मामले में सिर्फ स्ट्रांग बनाते हैं। वो डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस बार मौका था बट भैया का पास जो है वो पहुंचे नहीं। विथ रोनाल्डो आपको बहुत शॉट पावर मिलता है, फिर आप कहने कि वो फिजिक इधर मिलता हुआ दिखता है, एंड उसी के साथ साथ जो फिनिशिंग है वो भी बहुत लाजवाब है, बट आपको एजिलिटी कहने के नहीं मिलता। और अगर आप कोई टूर्नामेंट बहुत दिन से कोई एजाइल प्लेयर के साथ खेल रहे हो सेंट्रली, और उसके बाद आप अचानक से चेंज करोगे, देन प्रॉब्लम होता है कभी कभार। यूजुअली वाग्या को हम देखते हैं कि वो सेंट्रल गेम दिखाते हैं और सेंट्रली बहुत ज़्यादा ड्रिबलिंग करते हैं या फिर पासेस खिलाते हैं, बट आज वो हो नहीं रहा। और जाते जाते वो ऑब्वियसली लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, तो वो एंजॉय करेंगे। बट विथ मेसी इधर मिडफील्ड पे खिलाया जाता हुआ उनको, बट रोनाल्डिनियो शॉट, एंड उसी के साथ साथ इधर गोल कहने के होता हुआ दिख सकता था। A typical Wagya play, right? Just triggers the run there, breaks through, goes for a long through pass. But this time, well, let's see if Wagya in those final 15 minutes can find any, or is it going to be the third also going in for Saranj and scores his hat-trick. It'll be interesting to see. Wagya has found some room with CR7. Oh! Step over too many. Maybe could have just taken that shot. But still, I think Wagya is trying really hard to score with CR7. You don't see him making those passes there. He just wants to do it, get it done with his idol and finish his campaign. A little bit of a memory for him as the last 10 minutes that we get to see Wagya and Odisha FC play their final game of the league stage and their final moments inside this tournament as they tried to keep the ball in play but unfortunately got out. And Saranch is not one of those players who will be like, hey Wagya, ek score kar le. He's not going to let that happen. But yeah, now again Saranch breaks free with Hakimi. Oh, gets past the defender with Mbappe. Still holding on to the ball. He's gone behind with Jude Bellingham towards Ruud Gullit. Making sure he kind of tries to build that play up. But no, Wagya has managed to steal it away. Again stolen by Saranch. Very aggro charging by Virgil van Dijk there. But still somehow Wagya, the possession is shifting left and right for both these clubs. Oh, that charge tackle has to be a foul. Yeah. आखिरी 3 मिनट और क्या कोई भी गोल आता हुआ दिखेगा वाग्या की तरफ से? वाग्या की तरफ से तो पता नहीं, बट सारांश की तरफ से जरूर दिख सकता था इस टाइम पीरियड के ऊपर। बट वो बॉल, ओह नो, वर्जिल वैन डाइक, फिर भी फाउल नहीं दिया गया, शायद कनेक्शन था। थ्रू बॉल लियोनेल मेसी एज ऑफ नाउ, बट वर्जिल वैन डाइक फाइनली बॉल होल्ड करेंगे। आखिरी 1 मिनट, आखिरी एक चांस नहीं बन पाएगा उनके तरफ से। और इसी के साथ शायद इधर इस ट्रांजिशन पे ही बॉल फुल टाइम का जो विसल है वो इधर बचता हुआ दिख जाएगा। एंड या विद दैट गेम हुआ खत्म फाइनली, एंड उसी के साथ फुल मैचअप इधर एंड होता हुआ, ओडिशा एफसी का सीजन इसी के साथ होता हुआ एंड। हो सकता है उतना खास नहीं था, हो सकता है कि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो इधर से वो सीख के जाएंगे वो बहुत काम आएगा इन फ्यूचर उनके इस पूरे फीफा कैरियर के ऊपर। तो बेस्ट ऑफ लक टू देम, एंड आशा करते हैं कि नेक्स्ट साल बहुत अच्छे से कम बैक करेंगे। Thank you so much, Wagya and Nate, for entertaining us, for giving it your all.
We know not the best of the season, not the kind of a season you would have wanted, but nonetheless, a nice learning experience for the lads, and I'm pretty sure they're gonna come back stronger. I'm pretty sure when we see them next season, you'll see a different version of these players. I don't know if they're going to be playing for the same club, but whichever club they will represent, I think they're going to give them, bring them glory. But yes, it's a kind of one of those goodbye moments, right? Because never thought would get so emotional about it. A little bit of my home touch also being there for the Juggernauts, you know, and yes, टीटी आपका भी क्लब का बहुत जल्दी गुड बाय टाटा आ रहा है, वैसे भी उनका भी फाइनल Yeah. गेम बहुत जल्दी आने वाला है. But yeah, Odisha FC uh, was filled with a roller coaster. They tried so much. They had those joyous moments also. Some moments where they would absolutely rage, and I don't know if it would have been me, I would have broken a few controllers also. But yeah, let's take a look at the scorecard for the one last time for Odisha FC, as they were unable to take down the giants, that is Northeast United FC. So they've been slain, and it's okay. They still go back with a lot of, a lot of bond being created with the players, and nice experience nonetheless. And they'll be happy. They'll be happy with how far they've come, right? And this is just this beginning for them. But who was the star player in this game? And do you have any doubt on that, TT? Let's take a look at the MVP and find Ahmad's beautiful, cute face in front of us. There you go with that smile. He steals the heart away of so many ladies, and also this time a lot of fans that he has garnered over. I'm pretty sure his little transition from also, having a second life as a streamer may go strong through, and would urge him to stream quite more often. But yes, 4 goals scored, very confident ones, and has been proving his mettle, showing that he is one of the finest in the league so far. Yes, and I think फैंस तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कमाए हैं अभी तक, जितने मैचेस वो खेले हैं, जिस तरीके से उन्होंने गोल स्कोर किया है, पॉइंट्स तो उन्होंने लिया ही लिया है, लेकिन जो फैंस उन्होंने अपने लिए बनाए हैं वो अनकाउंटेबल है. उनमें से मैं एक हूँ, एंड आई थिंक आप भी होंगे. तो ऑब्वियसली लाइक इस तरीके के प्लेयर्स को हम लोग सिर्फ मैच पे देखते हैं, ऐसे नहीं. मैं तो ढूंढता रहता हूँ कि कब वो स्ट्रीम करेंगे और मैं जाके देखूंगा, क्योंकि उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. और स्पेशली जो सबसे ज्यादा सीखने के लिए मिलता है वो है कामनेस. आप जीतो तब भी आप काम रहो, आप हारो तब भी आप कोशिश करो कि आप काम रह के उससे कम बैक करने की, और वो उन्होंने किया है बहुत बार. अगर एक गोल पीछे भी रहते हैं फिर भी वो कम बैक करते हैं. तो ये चीज इनसे बहुत बहुत ज्यादा मुझे तो सीखने के लिए मिला है. I mean, सीखने के लिए तो बहुत कुछ मिला था, बट चलिए ओडिशा एफसी का तो सफर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है. बट फिलहाल के लिए हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे, क्योंकि आज का जो महामुकाबला है इस ब्रेक के बाद आपको देखने को मिलेगा.